Quran chapter 46, verses 7 and 8, lesson 3028. Title is Conduct with Quran. Chapter Ahqaf, the wind-curved sandhills. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 7. And when our clear revelations are recited unto them, those who disbelieve say of the truth when it reacheth them, this is mere magic. Verse 8. Or say they, he hath invented it. Say, O Muhammad, grace, glory, blessing and peace be upon him, if I have invented it, still ye have no power to support me against Allah. He is best aware of what ye say among yourselves concerning it. He sufficeth for a witness between me and you, and he is the forgiving, the merciful. Commentary. It is commanded, when our revelations are recited before them, clear truth is disclosed and they feel its impression on their hearts, then they who have gripped up their loins to deny say for evading, this is obvious magic. They do not find any reasonable excuse for disbelieving it. Some of them begin to say, he himself, grace, glory, blessing and peace be upon him, has invented these verses and says that these are sent by Allah Almighty. Say to them, I cannot have so much courage before Allah Almighty. None, including you, can protect me from His wrath if I do so. Like this, He is most knowing of the deception, tricks and excuses in which you are involved. I produce His evidence that I have been speaking the truth, and it is from Him. Sufficient is He as witness between me and you. He will forgive if you avoid such conduct. It is His kindness that you are still safe and sound from destruction in spite of your such arrogance. When the time of punishment will come, then the liars will be overtaken by whole misfortune. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے قرآن کے ساتھ برتاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَى بِهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. اور جب انہیں ہماری کھلی کھلی باتیں سنائی جائیں تو منکر سچی بات کو جب ان تک پہنچی کہتے ہیں یہ سری جادو ہے. کیا کہتے ہیں کہ بنا لایا ہے جسے تو کہہ اگر میں بنا لایا ہوں تو تم اللہ کے سامنے میرا ذرا بھی بھلا نہیں کر سکتے. اس کو ان باتوں کی جن میں تم لگ رہے ہو خوب خبر ہے، اور میرے اور تمہارے بیچ حق بتانے والا کافی ہے، اور وہی ہے بخشنے والا مہربان. تو فی دونا مصروف ہو تم، لگے ہوئے ہو تم، مضارع کا صیغہ ہے، حفاظت ان سے، جس کا مادہ ہے یہ زواد ہے.
फैज़ के मानी बह पढ़ना जारी हो जाना। अफाज़ा इसका मुतअद्दी है जिसका मुज़ारे तुफ़ीज़ है, यानी बहा दिया, जारी कर दिया। जिस काम में इंसान हर वक्त लगा रहे उसको गोया वो बहा रहा है, इसलिए मुहावरे में इसके मानी हो गए मसरूफ़ रहना, लगे रहना। इरशाद है कि जब उन लोगों के सामने हमारी साफ साफ आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं और उनमें बिल्कुल सच्ची बातें बताई जाती हैं और ये दिल में उनकी सच्चाई का असर महसूस करते हैं, तो वो लोग जो इनकार पर तुले हुए हैं ये कहकर टाल देते हैं कि ये तो साफ जादू है। उन्हें कोई माकूल बहाना उनके ना मानने का नहीं मिलता। बाद लोग इससे भी बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि ये आयतें इसने खुद गढ़ ली और अल्लाह के नाम पर लगा दी हैं। उनसे कहो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने मैं ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता, अगर करूं तो उसके गज़ब से मुझे कोई नहीं बचा सकता। तुम तो क्या चीज़ हो जो बचाओगे। इसी तरह वो तुम्हारे मकरो फरेब से भी खूब वाकिफ़ है और तुम्हारे हीले बहाने अच्छी तरह जानता है। मैं उसी की गवाही पेश करता हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ सच है और उसी की तरफ से है। अल्लाह तबारक व तआला की गवाही बिल्कुल काफ़ी है। अगर तुम ये बातें छोड़ दो तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा। ये उसी की रहमत है कि उन गुस्ताखियों के बावजूद तुम लोग तबाही से अब तक बचे हुए हो। जब सज़ा का वक्त आएगा तो जो झूठा होगा उसकी पूरी पूरी कमबख्ती आएगी। सदाकल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व सदाका रसूलुहुन नबियुल करीम।